Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Here it's me, Ms. Basajid, and I welcome you all to my channel Talim for Everyone and Computer Science for Grade 10 Karachi Board Lecture Series. Unit 1 Problem Solving and Algorithm Designing. From this chapter, we have already covered section 1.1 Problem Solving, 1.2 Algorithm, and 1.3 Flowchart. And here it's section 1.4 data structure. And before starting this section, we have to see basically what is data and data type. And at the end of section 1.4, after completing section 1.4, student would be able to define linear data type, stack through array, and non-linear data type, tree and graph. This is the lecture 4 of unit 1. Okay, so let's begin with this lecture. What is data? I hope so you all know that data is basically a plural of data, means information. So data is a value. Data is a value or a set of values. You can see that data is any information in raw or organized form using alphabets, numbers, or symbols that refer different object or different ideas. Here it is mentioned again that there are two types of data such as numeric and alphanumeric. For example, there are 32 students in any class and I wish to see their ages. Then you can say that ages is the type which is in numeric form. For example, student A age is 16 years, student B 14, student C 13 year, like this. So all these type of data are the example of numeric data. What about alphanumeric data? If we wish to see the gender of student, or you can say religion of a student, fine, and birthplace of a student. These are the alphanumeric data. Fine. Data type tell us two things, basically set of values that can be stored in a particular type of variable or set of operation that can be performed on particular type of variable. For example, if I have to write any, if I have to calculate any number, two and three, so I can simply write 2 plus 3 is equal to 4. Fine. But कंप्यूटर जो है वो ऐसा नहीं करता. वो पहले जो है किसी वेरिएबल में जो है वो नंबर स्टोर करता है, उसको हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि हमने करना क्या है, ठीक है, करवाना क्या है, बेसिकली इस पर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है. डायरेक्टली वो 2 plus 3 करके जो है रिजल्ट नहीं दे देगा, इट इज 5. पहले वो देखेगा हमें हम उसको वैल्यू कौन सी दे रहे हैं, वेदर इट इज integer, you can say whole number, decimal form or floating form, ठीक है. फिर देन उस और हम रिजल्ट किस फॉर्म में मांग रहे हैं उससे ये भी देखेगा. फिर उसके बाद जो है वो उस पर ऑपरेशन अप्लाई करके हमें फाइनल रिजल्ट देगा. फॉर एग्जाम्पल, here we have to find the average of 3 numbers. हम start लेंगे, then we have to declare these 3 numbers. For example, number 1, number 2, number 3 and average means हमें किस फॉर्म में चाहिए वो values. For example, number 1, number 2, number 3 integer फॉर्म में चाहिए, and जब ये सब integer फॉर्म में होंगे तो obviously जो रिजल्ट होगा एवरेज होगा वो भी integer होगा, ठीक है. रीड वैल्यूज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 मींस हमने अब उसको इनपुट दिया. फॉर एग्जांपल 2, 3 and 3. Then we have to apply the formula. Average is equal to sum, means 2 plus 3 plus 3 divided by number of values 3. Then हमारे पास जो है average आ जाएगा और फिर हम उसको display करा देंगे. So this is the basically example of data type. Okay. Next is, for example,
जो मैंने अभी यहाँ पे समझाई उसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस तरीके से हम लेंगे, उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर एक्स फॉर एग्जाम्पल मीन्स हमें जो एक्स की वैल्यू चाहिए दैट शुड बी इन होल नंबर। Fine. So only numeric whole number can be stored in X, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, etc. Only numeric operation can be performed on X, that is addition, subtraction, etc. Sometimes primitive data types are not enough to solve all the problems, like complex number arithmetic means के सिर्फ सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है ना हमारे पास, सिंपल नंबर का जो है स्क्वायर रूट तो नहीं है ना, ये क्यूब रूट तो नहीं है ना, ये कोई और मैथमेटिकल फंक्शन सिंपल तो नहीं है ना। तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है यू कैन से दैट डेसिमल नंबर का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, या डेसिमल नंबर की जो है हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, बहुत टिपिकल नंबर है वो। और या जो है बहुत हार्ड डिफिकल्ट जो है हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी चीज पे। सो उसके लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नॉट इनफ। व्हाट इज बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये भी आएगा, भी आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, आई विल एक्सप्लेन दैट। मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ, ये ऐसी टाइप है डेटा स्ट्रक्चर की दैट स्टोर्स द डेटा ऑफ ओनली वन टाइप, मींस कि अगर एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया इट इज इंटीजर, तो वो उस एक्स में जो वैल्यूज आएंगी ना वो सारी की सारी होल नंबर आएंगी, उसमें जो है डेसिमल नहीं आ रही। मुझे जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो है वो एक्स डेसिमल ले या ना ले, डबल है, फ्लोट है, करेक्टर है, मींस कि इस इंटीजर एक्स में जो है ए नहीं आ जाएगा, बी नहीं आ जाएगा, या जो भी हमारे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल अल्फान्यूमेरिक डेटा है, तो वो इंटीजर एक्स में जो है अल्फान्यूमेरिक डेटा नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए हमें किसी और तरफ जाना पड़ेगा। सो फॉर स्विचिंग or to solve complex number arithmetic, we need to implement new data type from primitive one, that is called as non-primitive data structure or data type. Fine, that we will study in next slides. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any query, you may comment your query. Anytime I will try to respond them as soon as possible. So next is data structure. Now here we are going to start formally what is data structure. You may find this section on page 12 of your textbook. So a data structure is a particular way of organizing data in a computer to use it effectively. Data structure mainly specifies the organization of data by providing accessing method with correct degree of associativity. Data structure is a storage that is used to store and organize data. It is a way of arranging data on a computer so that it can be accessed and updated efficiently. Algorithm plus data structure is equal to program, or you can say that program is a combo of data structure and algorithm. Data structure को आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपने कोई भी बिल्डिंग बनानी है उसके लिए आपको जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। सिमिलरली किसी प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट इज नॉट इनफ, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का जो है स्ट्रक्चर मतलब कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी पीछे डिस्कस कर रही थी कि जो है अगर मेरे पास डेटा इंटीजर फॉर्म में तो मुझे इंटीजर ही अप्लाई मतलब कि उसको उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर ही रखना होगा, ना कि मैं उसको जो है बोल दूं करेक्टर या बुलियन, ये नहीं होगा। सो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि our data structure is a particular way of organizing data in a computer to use it effectively. Data structure mainly specify the structured organization of data by providing accessing method with correct degree of associativity. For example, मुझे एडिशन करनी है किसी दो नंबर पे, तो जो है मैं एडिशन जो ऑपरेटर में यूज करूंगी उस वहां पे वो मैं प्लस का यूज करूंगी, नॉट सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये डेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट इन प्रोजेक्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर फॉर योर प्रोजेक्ट।
For example, if you want to store data sequentially in the memory, then you go for the array data structure, because array data structure is used to store a list of items having the same data type. For example, अगर आपने आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप अपना प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आगे काम करें, ठीक है। राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज करना जो है आप पे बेस करता है अपने प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टोर डेटा सिक्वेंशली, फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं आपका जो डेटा है वो सिक्वेंशली जो है मेमोरी में स्टोर करे। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो सेंडिंग ऑर्डर में, मैं एक से रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, 1 2 3 4 5, या डिसेंडिंग, मतलब कि एक स्ट्रक्चर हो, एक ऑर्डर पता हो, तो उसके लिए आप किसकी तरफ जाएंगे, एरे डेटा स्ट्रक्चर, because this type of data structure is used to store a list of items having the same data type. It is used to store data sequentially but of same data type, either character or float, or you can say integer, but हो एक ही type का data, not more than one type, ठीक है। So this is a linear data structure. Data structure may be linear or non-linear. Fine. Data structure further divided into two types, linear or non-linear. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have still any confusion, so you may comment your query. Here is a random example that I have already discussed in previous slide. What is data वाली slide में जो मैंने discuss किया था, like example है एक, consider numeric type. Two possible data structure are there, for example integer and float. Integer में तो सिर्फ simple magnitude आएगा, for example 2 3 4, but float में जो है आपका exponent भी आएगा and mantissa भी आएगा। Magnitude means के for example 3.2 multiplied by 10 raised to the power 3. This is the magnitude and this is the basically exponent. इसके फ्लोट इज में जो हमारे पास नंबर स्टोर करेगा वो बेसिकली डेसिमल फॉर्म में होगा। सो इट कैन बी इन दिस फॉर्म, पावर फॉर्म, और इधर और इट कैन बी इन सिंपल डेसिमल फॉर्म। फाइन। सो इस तरीके का जो है डेटा स्ट्रक्चर है, ये हम हमारे पास हमने जो लिया है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नहीं आएंगे, करेक्टर नहीं आ जाएगा, ठीक है, कोई और चीज जो है इसमें नहीं आएगी। सो आई होप से यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। Here it's the big picture, and we have already discussed that data structure is the combo of organized structure. Organized structure means you can say that different set of values, fine, and plus operation, fine. So program is the combo of data structure and algorithm, and data type basically based on two things, set of values and set of operation on that values. And data structure basically a combo of set of values or set of operation. Set of values, you can see that organized structure, and it is also data structure also defines the set of operation as well. Okay, so this is simply the big picture, but whatever we have discussed in previous 2 or 3 slides. Next, here it is classification of data structure. Data structure basically divided into two types, primitive data structure, non-primitive data structure. Primitive means integer, real, character, or boolean. Primitive data structure, I have told you in previous second slide or first slide, that data structure that stores the data of only one type, whereas non-primitive can store data more than of one type. Like linear data structure, non-primitive can be is further divided into two types, linear data structure and non-linear data structure array. Linear is further divided into four data structure, non-linear two. So array, linked list, stack, queue, non-linear data structure, trees and graphs. So these are the classification of data structure.
Okay, one more thing, primitive data structure, you can see that this is the type of data type. Here it's from primitive and non-primitive data structure. Primitive data structure are the basic data structure that directly operate upon the machine instruction. They have different representation on different computer: integer, floating point numbers, character, constant, string, constant, and pointers come under this category. Non-primitive data structure. Non-primitive data structure are more complicated data structure and are derived from primitive one. They emphasize on grouping same or different. Okay, one more thing is that non-primitive data structure are complicated data structure and are derived from primitive one. नॉट नेसेसरी के यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ही डेटा जो है डेटा टाइप हो. इट is they emphasize on grouping same or different data type. For example, array की बात हुई थी. I have discussed the example of array. तो यहाँ पे जो है जो सीक्वेंशियली जो है डेटा टाइप एंटर होना चाहिए. तो सीक्वेंशियली में आप जो है या तो आप नंबर सीक्वेंस वाइज जो है स्टोर करा सकते हो या फिर करेक्टर. वन टाइम में जो है एक ही डेटा जाएगा. ठीक है, नॉट ए आफ्टर ए टू देन थ्री देन बी, नॉट लाइक दिस. So they emphasize on grouping same or different data type with relationship between each data item. Array, list, stack, queue, these are the type of linear data structure. Trees and graphs come under this category. Okay, and trees and graph are non-linear data structure. Fine. This type of data structure further divided into two types: linear data structure and non-linear data structure. These purple highlighted is linear one, and this red one are fall into non-linear data structure. Fine. Sorry. So I hope so यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any query, still I can say that कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव जो है इतना डिटेल में नहीं है, बल्कि वो है ही नहीं. डायरेक्ट जो है लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट करवाया हुआ है. बट आई हैव ट्राइड टू कन्वे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सो यू में comment your query anytime. I will try to respond. Okay, so ये अगर आप लोग करेंगे तो it would be beneficial for you. Fine. So linear and non-linear direct जो है data structure की type नहीं है, बल्कि linear data structure and non-linear data structure are the type of non-primitive data structure. Fine. And furthermore, one more thing, that primitive data structure are the type of data structure as well. But जो primitive data structure है basically उनको हम data type कहते हैं. But overall जो है ये सब data structure की ही types या जो है उनकी data structure का ही hierarchy है जिसमें जो है ये सारी चीजें जो है fall कर. Fine. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for everyone. And don't forget to hit like button and press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहे. So thank you once again. Allah Hafiz.